Hello student, today we will see IA32 of Unit 4. This article is about the 32-bit generation of Intel microprocessor architecture for the x86 architecture in general 86. आपने देखा होगा जो आप कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो उसके अंदर x86 लिखा आता है. इट मीन्स वो क्या है, दैट इज़ फॉर 32-बिट आर्किटेक्चर. ठीक है ना. आइए 32 शॉर्ट फॉर इंटेल आर्किटेक्चर 32-बिट. ठीक है. समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड i386. ठीक है. इट्स द 32-बिट वर्जन ऑफ 80 देन द x86 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर. जो भी आप सॉफ्टवेयर लेते हो अगर उस पर x86 लिखा है या i386 लिखा है, इसलिए इट मीन्स वो क्या है, वो आपका x86 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है. ठीक है. दैट इज़ डिज़ाइन बाय इंटेल and first implemented in the 80386 micro processor in 1985. IA32 जो था is the first incarnation of x86 that support 32-bit computing. As a result, in IA32 terms may be used as a metonymto refer to all the x86 versions that supports 32-bit computing. बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में IA32 जो है स्टिल समटाइम रिफर्स टू एज द i386. ठीक है, आर्किटेक्चर. इन सम अदर कॉन्टेक्स्ट सर्टेन इंटरेशंस ऑफ द IA32 ISA आर समटाइम्स लेबल्ड एज i486, i586 एंड i686. ठीक है. दैट इज़ रेफर टू द इंस्ट्रक्शन सपोर्ट सुपर सेट ऑफर्ड बाई द 80486, द P5 एंड P6 माइक्रो आर्किटेक्चर रेस्पेक्टिवली. ठीक है. इंटेल जो था वो हिस्टोरिकली लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ IA32 प्रोसेसर्स का, विद द सेकंड बिगेस्ट सप्लायर हैविंग बीन AMD ड्यूरिंग द 1990s वाया ट्रांसमिटेंट. अदर चिप्स मैन्युफैक्चरर्स आल्सो प्रोड्यूस IA32 कंपेटेबल प्रोसेसर्स, एग्जाम्पल विन चिप. ठीक है. अब आर्किटेक्चर फीचर्स देखते हैं कुछ. द प्राइमरी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IA32 इज द अवेलेबिलिटी ऑफ 32-बिट जनरल पर्पस प्रोसेसर्स रजिस्टर्स. एग्जाम्पल के तौर पे IEX, IBX 32-बिट इंटीजर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. 32-बिट ऑफसेट्स विद इन अ सेगमेंट इज प्रोटेक्टेड मोड एंड द ट्रांसलेशन ऑफ सेगमेंटेड एड्रेस टू द 32-बिट लीनियर एड्रेसेस. The designers took the opportunity to make other improvement as well. Some of the most significant changes are described below. Changes कौन कौन से हैं? 32-bit integer capabilities. ये क्या है साहब? All general purpose registers जैसे GPRS are expanded from 16-bit to 32 bits, and all arithmetic and logical operations memory to registers and registers to memory operation etc. can operate directly on 32-bit integer sets. Pushes and pops on the stack to 4-byte strides and knocks segmented pointers at 4 bytes wide. More general addressing modes हैं. कोई भी general purpose register can be used as a base registers, and any GPR other than ESP can be used as an index registers in a memory reference. The index register value can be multiplied by 1, 2, 4 or 8 before being added to the base register value. एडिशनल सेगमेंट रजिस्टर्स हैं. जो दो एडिशनल सेगमेंट रजिस्टर्स हैं वो हैं आपके FS एंड GS, लार्जेस्ट वर्चुअल एड्रेस स्पेस. एंड अब लार्जेस्ट वर्चुअल एड्रेस पे IA32-बिट जो आर्किटेक्चर है वो 48-बिट सेगमेंट एड्रेस फॉर्मेट है विद 16-बिट सेगमेंट नंबर्स एंड 32-बिट ऑफसेट विद इन द segment address are mapped to 32-bit linear address. Now comes to demand paging. Demand paging क्या है? 32-bit linear address are virtual address rather than physical address. They are translated to physical address through a page table. मैंने आपको पेज टेबल के बारे में बताया था जब मैंने आपको वर्चुअल मेमोरी पढ़ाई थी. सेम कॉन्सेप्ट है. इन द 80386, 80486 एंड द ओरिजिनल Pentium processor, the physical address was 32-bit in the Pentium Pro and later processors. The physical
Address extension allowed 32-bit physical address, although the linear address size was still 32 bits. IA64 IE32 है एंड IE64 है. IE64 जो है वो दैट इज़ ऑल्सो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर. ठीक है, फॉर आइटेनियम फैमिली ऑफ द 64-bit मैक्रो प्रोसेसर. ठीक है, जो बेसिक स्पेसिफिकेशन होता है that is originated at Hewlett Packard HP and was evolved and then implemented in a new processors microarchitecture by Intel, with HP's continued partnership and the expertise on the underlying EPIC design concept in order to establish what was their first new ISA in 20 years and bring an entirely new product line to market. To market, Intel made a massive investment in product definitions. To support this effort, Intel created the largest design team in their history and a new marketing and industry enabling team completely separate from x86. The Intenium architecture is based on explicit instruction level parallelism, in which the compiler decides which instructions to execute in parallel. This contrasts with superscalar architectures, which depends on the processors to manage instructions dependencies at runtime. In all Itanium models up to and including Tuckvilla cores execute up to 6 instructions per clock cycle. In 2008, Itanium was the fourth most deployed microprocessor architecture for enterprise class systems behind x86 64, Power ISA and Spark. And there is the architecture. It is a 64-bit register rich explicitly parallel architecture. The base data word is 64 bits, byte addressable. The logical address space is 264 bytes. The architecture implement predication, speculation and branch prediction. It uses variable size register windowing for a parameter passing. The same mechanism is also used to permit parallel execution of loops, speculation, prediction, predication and renaming, and under control of the compiler. Each instruction's word includes extra bits for this. This approach is to distinguish characteristics of the architecture. The architecture implements a large number of registers, 182 general integer registers, which are 64-bit plus 1 trap bit, used for speculative execution. 32 of these are static. The other 96 are stacked using variably sized register windows or rotating for pipeline loops. Group 0 always reads 0. इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूशन होते हैं. इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन जो ग्रुप है वो क्या है इंक्लूड रखते हैं 6 जनरल पर्पस ALU, 2 इंटीजर यूनिट्स एंड 1 शिफ्ट यूनिट, 4 डेटा कैशे यूनिट्स, 6 multimedia units, 2 parallel shift units, parallel multiply and population count, 282-bit floating point multiply accumulate units, 2 SIM single unit multiple data floating point multiply accumulate unit, 2 32-bit operations each 3 branch units. जो एग्जीक्यूशन है यूनिट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, and this is what memory architecture from 2002 to 2006. Itanium 2 processors shared a common cache hierarchy. They had 16 kilobytes of level 1 instruction cache and 16 kilobyte of level 1 data cache. The level 2 cache was unified both instruction and data and is 256 kilobytes. The level 3 cache was also unified and varied in the size from 1.5 megabytes to 24 megabytes. The 256 kilobyte L2 cache contains sufficient logic to handle semaphore operations without disturbing the main arithmetic logic unit ALU. So this whole was about IA32 and IA64 processors. ठीक है.
is Intel architecture 32-bit based instruction set architectures for 32-bit and 64 bits. For this, uh, that's it. Thank you.